Hello students, let's start our general agriculture journey and we'll start off with the history of agriculture, the history of our field. We'll start with the first times in agriculture. पहली बार जो चीज़ें की गई थी, वेराइटीज़ रिलीज़ की गई थी, साइंटिस्ट दैट वर इन्वॉल्व्ड और डिजीज़ेस दैट वर फाउंड, माइक्रोब्स दैट वर फाउंड. So first timers of everything. So oftentimes exams में varieties पूछ लेते हैं. There are numerous varieties, but very important ones are the first release variety किसी भी crop का, या फिर किसी भी variety जिसका कोई एक specific character हो, कोई specific character हो. So those are the ones that we have to remember. So hybrid pigeon P, that was first released hybrid pigeon P was ICPH8. ये एकरी सैट हैदराबाद ने रिलीज़ किया था. फर्स्ट हाइब्रिड सनफ्लावर वेराइटी दैट वाज रिलीज्ड वाज BSH1. इसको प्रो एग्रो भी कहते हैं. तो यहाँ पे वील नोटिस दैट सनफ्लावर, सैफफ्लावर और सोरगम की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं उनका नेम काफ़ी सिमिलर है. BSH1, DSH129, CSH1. So sunflower और safflower, we can see कि they are pretty similar sounding. So they are B and D. B and D safflower, sunflower में involve हो गया. Remaining C is for sorghum. Okay, so we can make small tricks to remember these things, small tricks that can be related to our personal stories or things around us, anything जो भी हमारी मदद करने, याद करने में चीज़ों को. So फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी रिलीज वॉज H4. ये CT पटेल ने रिलीज़ किया था इस पे वर्क करके गुजरात में, सूरत में. एंड ये क्रॉस था गुजरात 67 एंड A नेक्टरलेस के बीच में. India was the country that first worked on cotton hybridization of cotton. And in rice we'll see semi-dwarf variety of basmati rice. So rice में there are multiple varieties. So what we have to notice is वो बासमती है या फिर normal rice है, is it dwarf, is it semi-dwarf, is it hybrid या फिर high yielding variety है. So these keywords are important, otherwise we'll miss the question. So the first semi-dwarf variety of basmati rice was Pusa Basmati 1. ये IARI ने रिलीज़ किया था. Okay, so one special thing is बासमती का जो स्पेसिफिक अरोमा है, उसका जो स्पेशल फ्रेग्रेंस है, उसकी वजह से इट सेल्स. सो वाई डज इट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक अरोमा? इट इज़ ड्यू टू द कंपाउंड 2-acetyl pyroline present in basmati rice. The first aromatic rice hybrid variety was Pusa RH10, Pusa Rice Hybrid 10. ये भी IARI ने रिलीज़ किया था. First sorghum hybrid, as we saw right before this, is CSH1. Those are, remember, BSH1 and DSH129. sorghum का है CSH1. ये 1964 में IARI ने रिलीज़ किया था. Now first public sector hybrid of forage sorghum. There are different public sector hybrids or private sector hybrids. So the keyword here is public sector hybrid forage sorghum का first was Pusa Chari hybrid 106. Okay, so next is first mango hybrid for commercial cultivation. So it is mango ka hybrid that was first used for commercial cultivation was Mallika. नीलम और दशहरी के बीच का क्रॉस है. The first public sector insect resistant multi cut forage. It is public sector and it is insect resistant multi cut forage. It is PCH106. ये sorghum की एक variety है, multi cut variety. And the first viral disease recognized in plants was leaf curl of tobacco. First plant parasitic nematode was Anguina triticei. Plant parasitic bacterial disease, the first one that we recognized was fire blight of apple. ये Irvinia amylovora की वजह से cause होता है. The first viroid disease was potato spindle tuber, not viral disease. Okay, the viral disease is leaf curl of tobacco
and the first viroid disease is potato spindle tuber. Sorghum high yielding variety, sorghum hybrid is CSH1, and sorghum high yielding variety HYV is CSV1. Rice variety introduced in India is TN1. As I told you earlier, rice mein it is important to keep note, is it a dwarf variety, is it a semi dwarf variety or a hybrid or a high yielding. So we'll keep note of it. The first rice variety that was introduced to India was TN1. TN1 Taiwan में डेवलप हुआ था 1964 में. We'll see that AICRP rice was started in 1965 in India. So this was introduced in 1964 and it started in 1965. We can see the years, they are pretty much coalescing. The first dwarf variety of rice that was developed was TN1, and as I told you, ये Taiwan में develop हुआ था. We'll see that the first dwarf variety is TN1 and hybrid high yielding dwarf variety is IR8. So high yielding dwarf variety IR8 है और dwarf variety first is TN1. IR8 was a cross between DG Wujen and PETA. It was released by IRRI in 1964. The first Indian high yielding semi dwarf variety of rice in India is Jaya. So it was developed in India, it was high yielding and it was semi dwarf and not just dwarf. So Jaya was a cross of TN1 and type 141. It was developed by Dr. Shastri in 1968. It was 4 years after TN1 or IR8. Then rice mein a few more we'll see is miracle rice. The miracle rice of the world is TN1 and miracle rice of India is Jaya. So you might be asked miracle rice in of India and TN1 or Jaya दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं. So you would go for Jaya and not TN1. TN1 बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ था. फिर हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड is NRC HB506. Hybrid variety of bajra is HB1 hybrid bajra 1965 में. Hybrid developed by using local male parent is Hare Chole number 1. Man-made cereal, this is a very commonly asked thing. Which was the first man-made cereal? It was triticale. It was a cross between wheat and rye, जिसमें commonly used male parent is wheat. Resistant variety of rice developed for yellow stem borer. Yellow stem borer is such a menace in rice crops. So the resistant variety, the first resistant variety was IR20. It was a cross between TN1 and TKM6. Going ahead, the first organophosphate compound that was developed was parathion, and the first hybrid cross between Napier and Bajra was Pusa giant. It is a forage crop. And then the first hormone was secretin. The first maize hybrid was Ganga 101 in 1961. You can look at the years. जो जितने भी rice varieties आए थे वो 1964 से आए थे. But way before that, maize was being released. It was in 1961, and AICRP of rice या wheat से पहले there was AICRP of maize. It was in 1957. So a lot of development in maize happened before any of it happened in rice. High productive early duration hybrid released by DRR in rice was DRR-H2. The country to first develop rice hybrid rice was China. China में सबसे पहले hybrid rice develop हुआ. उन्होंने 3 line system को use किया था और 1970s में उन्होंने develop किया था. And we all know, we can remember it, Chinese population is very fond of rice dishes. So obviously they worked pretty hard on rice varieties and they had the first rice hybrid. And the second country to develop
rice hybrid was India. We developed it in 1994. So many years after the Chinese did it, we did it in 1994. एंड सबसे पहली वैरायटी जो हमने रिलीज़ की थी वॉज APHR1. हमने भी 3 लाइन सिस्टम यूज़ किया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन. एंड we'll take a look back that super rice is also known as wonder rice. It was developed by G.S. Khush. He's a very renowned plant breeder of rice. And genetically, the first genetically modified rice was known as golden rice. You would have read it time and again. It was developed by Dr. Ingo Potricus, and the variety was T309 variety. द स्पेशलिटी गोल्डन राइस की है कि वो बीटा कैरोटीन और फेरिटीन में बहुत रिच है. द फर्स्ट हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया एज वी सॉ अर्लियर इज APHR1 एंड APHR2. इजिप्शियन वेराइटी ऑफ कॉटन इज सुजाता. ये एक हाई स्पिनिंग कॉटन वेराइटी है. सुपर राइस वेराइटी फॉर सलाइन अल्कलाइन कंडीशंस का नाम है लूनीश्री. लूनीश्री इज़ द सुपर राइस डेवलप्ड बाय डॉक्टर G.S. खुश. सो वी कैन रिमेंबर दैट राजस्थान में देयर इज़ अ लेक एक्चुअली जिसका नाम लूनी है. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लेक. सो डेजर्ट कंडीशंस में वी नो दैट हाई सलाइनिटी हाई अल्कलाइनिटी इज़ एन इशू. सो उन्होंने स्पेशल वेराइटी डेवलप की थी जो टॉलरेट कर सके उन कंडीशंस को, हाई सलाइन और अल्कलाइन कंडीशंस को, एंड उसका नाम है लूनीश्री. द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ज़ीरो टिलेज वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डू इट वॉज USA. सो इन द 1970s 1975 के अराउंड USA में एक्चुअली जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत हाई हो गए थे. एंड ऑल ऑफ अस नो कि ट्रैक्टर एंड ये जितने भी फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं उनको रन करने के लिए टू कल्टिवेट द सॉइल वी नीड ऑल दोज फार्म इम्प्लीमेंट्स जिसमें द फ्यूल इज़ यूज्ड. तो उस फ्यूल यूजेज को थोड़ा कट करने के लिए एंड कल्टीवेशन कॉस्ट को कट करने के लिए और डस्ट स्टॉर्म्स को रिड्यूस करने के लिए भी वहाँ पे द आइडिया ऑफ ज़ीरो टिलेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एंड ज़ीरो टिलेज वर अडॉप्टेड इन राइस एंड वीट सिस्टम. राइस और वीट सिस्टम जो है उसमें मतलब मेनली दे वर्कड अपॉन इट फॉर द फर्स्ट टाइम. देन the first sugarcane variety was CO205. Scented basmati rice for normal and sodic soils was Yamini. It was also known as CSR30. So this was basmati rice for normal and sodic soils. The first interspecific variety of cotton. So we should note that this is interspecific and not intraspecific. The first interspecific variety was Varalakshmi and the first intraspecific variety was H4. ये ही हाइब्रिड कॉटन है जो कि C.T. पटेल ने डेवलप किया था इन इंडिया. द फर्स्ट टोबैको हाइब्रिड was GTH1. The first safflower hybrid we saw earlier is DSH1. Those are BSH1 and sorghum ka we saw was CSH1. We should keep note of the tricks we make. And the first crop to have its genome decoded was rice. Later we'll see the first plant was another one, but the crop specifically was rice, commercially grown crop. Single cross made hybrid, the first one was Paris. Maize में there is also double cross hybrids, and double cross in maize was developed by D.F. Jones. डबल क्रॉस सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है हाइब्रिड सीड्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मेज़ में. द फर्स्ट पैथोजेनिक रेजिस्टेंट जीन was HM1. Systemic fungicide was carboxin. The first organic fungicide was dithiocarbamate. We should keep note this is an organic fungicide and this is a systemic fungicide. And the first ever fungicide overall was Bordeaux mixture. Bordeaux is inorganic in nature and it is a mixture of lime and copper sulfate. So the formula stands to be CaOH
whole twice, plus CuSO4. Person to the first person to record plant diseases was Theophrastus. The first plant, as I told you, the first crop was rice, but the first plant to have its genome decoded was Arabidopsis thaliana. Autopolyploid variety released for commercial cultivation in India was Pusa giant berseem. The first chlorine compound was DDT. ये इंडिया में अब बैंड है क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन के बहुत एक्सट्रीम केसेस DDT कॉज कर रहा था among our ecosystem, and it is a very harmful thing, so it has been banned. The first carbamate compound was Sevin carbide. First laureate of World Food Prize is our renowned Dr. M.S. Swaminathan. The first Director General of ICR is Dr. B.P. Pal. First President of ICR is Muhammad Habibullah. The first Indian scientist who collected and identified the fungus was Dr. K.R. Kritikar. And the first agricultural university, as all of us know, it was established in 1960, was G.B. Pant in Pantnagar, Uttarakhand. Moving ahead, we'll see the first plant pathologist of India was Dastur. First plant parasitic bacteria was reported by T.J. Burrell, and first plant parasitic nematode was reported by Needham. Mycoplasma disease reported by Du et al. And Ishid et al. Virus was first discovered by Ivanovsky. The first scientist to study fungi and their species was Micheli. The first transgenic plant was tobacco. तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज टोबैको, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एरिया है ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर वो कौन सी क्रॉप में है? इट इज़ अंडर सोयाबीन. ओके, एंड the first biotechnological crop introduced in India was BT cotton in 2002. 2002 में our government actually agreed that okay, we are okay with genetically modified crop to be used in India for commercial cultivation. The first hormone artificially produced by culturing bacteria is insulin. The first commercial bio-insecticide is sporine, and 00 or canola type variety of gobi sarso. So what is 00 or canola? We all know about rapeseed and mustard. Rapeseed and mustard mein there is this erucic acid present, and erucic acid is not preferable in high quantity. So the varieties that have low quantity of erucic acid are known as canola type variety, or we also call it 00. So the first canola type variety was PGSH51. Short duration pigeon pea hybrid is PPH4. The first leaf curl resistant cotton hybrid was Fateh LHH144. Sorghum और Sudan grass का first cross hybrid between sorghum and Sudan grass was Sudan cherry number 1. The first fungicide used was sulfur. It was used to treat powdery mildew in grapevine. The first insecticide to be ever used was Paris green. First BT cotton variety was Bolgard. The gene present in it was Cry1AC. We should keep note that BT cotton was developed by C.D. Mai and hybrid cotton was used by C.T. Patel.
सीटी पटेल ने कौन सा हाइब्रिड कॉटन डेवलप किया था, उस वेराइटी का नाम था H4 और वो एक इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी थी, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉप था। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉटन में इंडिया इज़ द पायनियर। देन द फर्स्ट फ्यूमिगेंट यूज्ड वाज हाइड्रोसायनिक एसिड। First hybrid in India was Pusa Meghdut. It was a variety of bottle gourd. So before wheat or rice or maize or any of these commercial crops, the first hybrid that came in India was a bottle gourd variety that was known as Pusa Meghdut. Okay, we might confuse. We might actually go ahead and take a field crop, but actually it was a bottle gourd variety. And the first commercial fertilizer was SSP, single superphosphate. This was the commercial fertilizer. The first fertilizer that was ever to be used in general was calcium nitrate. The formula stands to be CaNO3 whole twice. In case of cotton, we should also note that the first colored cotton variety was JCC1. It was developed by KC Mandloi in Khandwa. Moving ahead, we'll talk about the various revolutions that happened in our agricultural field. The first one is the very well known Green Revolution. तो जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन वो कॉइन किया था विलियम एस गॉर्ड में. A lot of time ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते ही we might just go ahead and take MS स्वामीनाथन या फिर एनी बोरलॉग probably, but here we are saying कि जो टर्म था ग्रीन रेवोल्यूशन itself was coined by William S. Gord. So green revolution, William S. Gord was he coined it in 1968 and he was from USD to describe the productivity based improvement of food production, particularly in wheat and rice. So when we talk about green revolution, we are mainly laying emphasis wheat और rice पे. मेन कंपोनेंट्स क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या मेन फैक्टर्स थे. तो वो जो हाइपर बूस्ट था प्रोडक्शन में, दैट वाज ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ की गई और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स का यूज़ किया गया. व्हाट आर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स? दे कैन बी फंगीसाइड्स, दे कैन बी इंसेक्टिसाइड्स या फिर दे कैन बी हर्बिसाइड्स. सो यूज़ ऑफ दीज स्पेसिफिक थिंग्स, गुड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर प्रोटेक्टिव केमिकल्स, उनकी वजह से वो बूस्ट आया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एंड वी रीच्ड फूड सिक्योरिटी. एंड देयर इज दिस अनदर revolution called evergreen revolution. So this term was coined by our beloved Dr. MS Swaminathan. It is used to denote the green revolution based on sustainable methods of crop intensification and diversification. So that was green revolution. And evergreen revolutions is they are denoting कि the boost in production was due to sustainable methods. Crop intensification और diversification के the methods that were used वो sustainable थे. तो for that specific process we call it evergreen revolution. There is this another revolution, vertical revolution in India, maximizing production per unit land area, per unit time, using intensive cropping system, high production inputs and improved management practices. So vertical revolution was per unit area and per unit time हम productivity throughout the land, throughout the year हम production को maximize कर रहे हैं, productivity increase कर रहे हैं. कैसे? इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करके, हाई इनपुट्स यूज़ करके और अच्छी और इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करके. अदर रेवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, यू वुड हैव हर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट, ये डिफरेंट कलर्स के रेवोल्यूशंस, इनका रिलेशन है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, किसी क्रॉप से. तो वी विल लर्न अबाउट देम एंड इन दिस वी कैन सी कि अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस विल बी अप्लाइड कि काफ़ी टाइम वी कैन रिलेट द कलर टू द क्रॉप, टू द फ्रूट और वट एवर. सो वील सी. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फूड ग्रेन प्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात होती है
मेनली हम वीट और राइस में, द स्टेपल क्रॉप हमारा, स्टेपल राइस क्या है हमारा, रोटी चावल, सो राइस और वीट की बात होती है. वाइट रेवोल्यूशन वॉज a rise in milk production. It was brought about by Dr. Kurian, as we know. Now blue revolution, fish production. मछली है, पानी में रहती है, blue color, very easy to remember. तो blue revolution was fish production. ब्राउन रेवोल्यूशन वॉज फूड प्रोसेसिंग. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि फूड प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद कोई भी चीज़ पैक होती है, राइट, प्रोसेसिंग में. तो पैक करने के लिए हम कार्डबोर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर वो पेपर बैग्स यूज़ करते हैं. नॉर्मली तो वो ब्राउन कलर के होते हैं ना. तो ब्राउन रेवोल्यूशन इज़ फूड प्रोसेसिंग, राइट. देन ग्रे रेवोल्यूशन इज़ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. And yellow revolution is oil seed production, mainly mustard. Mustard ka flower is yellow. We can remember that oil seed, that is mustard. So yellow revolution is related to that. Red revolution is related to tomato and meat production. The color, as we can see again, is relatable. Pink revolution was for prawn and onion. Onion का नहीं color, that is हल्का सा purplish and pinkish. एंड प्रॉन अगर आपने देखा है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर होता है, सब पिंकिश रेडिश टाइप का कलर होता है उसका. तो पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू देम. गोल्डन रेवोल्यूशन वॉज फॉर फ्रूट प्रोडक्शन. ओके. देन राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो, वी नो इट्स राउंड एंड ओवल, नाइस. तो राउंड रेवोल्यूशन वुड बी रिलेटेड टू पोटैटो, इजी टू रिमेंबर. सिल्वर रेवोल्यूशन वॉज फॉर एग्स and poultry production. I hope it was सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, but right here it is चांदी का अंडा देने वाली मुर्गी. So anyway, you feel it fit to remember. Black revolution is for biofuel and jethropa production. We should not confuse between black revolution and grey revolution. Black revolution is for biofuels. We can also remember कि crude oil and any fuel, we kind of try to imagine crude oil as a dark liquid. So black revolution and grey revolution is like, you know, grey powder fertilizer. So we should not confuse between the two. And rainbow revolution is all sectors of agriculture कि इसमें overall development, overall boost हर sector को agriculture के, that is rainbow, all colors are involved, right. Then Prabhani revolution was related to okra production. Okra we know as ladyfinger. Okay, going ahead, we look at important days in agriculture. So there are different days जो कि different important days की तरह celebrate किए जाते हैं, उनकी significance होती है. water resource day, consumer day, forest day. So ये काफ़ी बार exams में पूछे जाते हैं, तो we have to remember the important ones. So we begin with 11th March को there is water resource day is celebrated, and उसके just 4 दिन बाद world consumer day is celebrated. So you can make different tricks to remember it anyway. It can be someday near to your birthday, your friend's birthday, या any day that holds तुम्हारे लिए कोई भी significance. तुम कैसे भी ट्रिक बना के इन डेज को उनसे रिलेट करके नाम उनके याद रख सकते हो, उनकी सिग्निफिकेंस याद रख सकते हो. तो 11th March is water resource day, 15th March is world consumer day. देन 3 डेज एक के बाद एक आते हैं, 21st March, 22nd March और 23rd March को. ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और एग्जामिनर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो तुमसे फॉरेस्ट डे पूछेंगे और ऑप्शन में 21, 22, 23 मार्च तीनों रहेंगे. ठीक है, तो मैंने इसकी ये ट्रिक बनाई थी कि 21st March को मैं फॉरेस्ट में गई और फिर मैंने पानी पिया और फिर मैंने स्टार्स देखे. तो ये कैसे रिलेट होता है, 21st March को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है तो मैं फॉरेस्ट में गई. फिर 22nd March को वाटर डे है तो मैं फॉरेस्ट में गई, फिर मैंने पानी पिया. और फिर 23rd March को वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे है. मीटरोलॉजी इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इट्स रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. तो ये मेरे को रिमाइंड्स मी ऑफ स्टार्स, तो मैंने इसको मीटरोलॉजी को स्टार्स से रिलेट कर दिया. तो मैं पहले फॉरेस्ट में गई, जंगल में गए, फिर मैंने पानी पिया और फिर उसके बाद हमने स्टार्स देखे. तो दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर दिस. 21st, 22nd, 23rd March. देन 22nd April को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट होता है. फिर उसके बाद
5 जून को देर इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इफ़ यू नोटिस इनफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरनमेंट डे पे नॉर्मली दे रिलीज सम क्विज या फिर ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. somehow they somehow try to celebrate it a little. Then 1st जुलाई को देर इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल डे. देन उसके 10 दिन बाद 11th जुलाई को देर इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. जुलाई के एंड इसके 5 दिन बाद देर इज़ ICR डे सेलिब्रेटेड. हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दे टेंड टू सेलिब्रेट ICR डे. सो यू कैन रिमेंबर इट कि जुलाई में 16 मिड जुलाई में दे सेलिब्रेट ICR डे. तो जुलाई में सबसे पहले जुलाई स्टार्ट ही हुआ कि नेशनल एग्रीकल्चरल डे है, फिर उसके बाद 11th को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, और फिर 16 जुलाई को ICR डे है. जुलाई के बाद अगस्त में इफ़ यूर इन रावे तो यू वुड हैव नोटिस्ड अगस्त में लगभग एक वीक में एक स्पेसिफिक वीक होगा जिसमें 1 या 2 दिन तो कम से कम योर KVK इंचार्ज विल आस्क यू कि थोड़ा गाजर घास उखाड़ते हुए थोड़ी ऐसा फ़ोटो क्लिक करवाएंगे. तो ऐसा क्यों? बिकॉज 16 to 22 अगस्त ये जो टाइम है, ये जो वीक है, इसे पार्थेनियम अवेयरनेस वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. तो यू टेक नोट ऑफ दीज डेट्स एंड you'll also experience it during your Rave, so take notice. And coming back 16 जुलाई, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर, ये 16 और जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त को हटा दो, ठीक है. तो ये तीनों में 16 है और डिफरेंट मंथ्स में देर इज़ ICR डे, देन ओजोन डे एंड वर्ल्ड फूड डे. यू कैन गेट अ लिटिल कन्फ्यूज कि कौन सा 16 था कौन से मंथ का. तो आई रिमेंबर्ड इट एज 16 जुलाई को हमने ICR डे सेलिब्रेट करने गए यूनिवर्सिटी में. दे हैड सम प्रोग्राम, तो वी वेंट देयर. उसमें कुछ स्पीचेस चल रहे थे, प्रेजेंटेशंस चल रहे थे, यू नो द बोरिंग वंस, राइट. तो स्पीचेस में somebody was saying about ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लीशन, ये वो. तो ओजोन के बारे में someone was speaking एंड देन ICR डे का जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो फिर हमको फूड सर्व किया. एज़ यू नो यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी प्रोग्राम के बाद कुछ तो रिफ़्रेशमेंट्स होते ही हैं. तो यू कैन रिमेंबर इट एज़ ये सारे 16 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर. पहले हम ICR डे के सेलिब्रेशन में गए, वहाँ पे किसी ने स्पीच दिया, प्रेजेंटेशन दिया ओजोन के बारे में, और फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमने रिफ़्रेशमेंट्स खाए, वी हैड सम फूड. तो वर्ल्ड फूड डे. देन 4 दिसंबर को देर इज़ विमेन इन एग्रीकल्चर डे एंड 5 दिसंबर को जस्ट उसके नेक्स्ट डे देर इज़ वर्ल्ड सॉइल डे. मैंने इसको कैसे याद किया था? कोइंसिडेंटली 15 दिसंबर को मेरी मॉम का बर्थडे है. तो और डेफिनेटली परफेक्टली कोइंसिडेंटली आई ऑल्सो कॉल हर मिट्टी, राइट. मुझे पता भी नहीं था उससे पहले से आई यूज्ड टू कॉल हर मिट्टी. तो यू नो उसके बर्थडे के दिन, मिट्टी के ही बर्थडे के दिन मिट्टी दिवस है, तो वर्ल्ड सॉइल डे. एंड उससे जस्ट पिछले दिन इट इज़ विमेन इन एग्रीकल्चर डे. ऑब्वियसली शी इज़ अ वुमन. तो यू कैन रिमेंबर इट इन सम अदर वे प्रॉबेबली कि 4 दिसंबर को यू नो women went ahead and worked farms में, एग्रीकल्चर में, and the next day the soil that they touched उसका डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, you know women are good. So 23 दिसंबर को उसके बाद नेशनल फार्मर्स डे आता है. तो नेशनल फार्मर्स डे और नेशनल एग्रीकल्चरल डे जो कि 1 जुलाई को, इन दोनों के बीच में हमको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है. नेशनल फार्मर डे हाउ आई रिमेंबर्ड इट वाज कि 25 दिसंबर को देर इज़ क्रिसमस, राइट, हॉलीडे होती है. तो आई वुड जस्ट रिमेंबर नेशनल फार्मर्स डे कि यू नो क्रिसमस के आसपास फार्मर डे होता है, तो क्रिसमस के आसपास फार्मर की भी एक छुट्टी होती है. तो ऐसा मैंने करके रिमेंबर किया था इसको कि 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे. देन कमिंग टू इंटरनेशनल ईयर्स, FAO हर साल को पहले से ही एक इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर देता है. वो किसी कमोडिटी को या किसी भी चीज़ को, कोई समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं. कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. लोग उसके बारे में थोड़ी यू नो उसको अपनी पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स, या फिर इन जनरल NGOs उन पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ करते हैं. तो बेसिकली और फोकस डालने के लिए किसी एक चीज़ का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर दिया जाता है. तो देर आर डिफरेंट इंटरनेशनल ईयर्स. आई थिंक 2004 से लेके 2024 तक के वी शुड रिमेंबर, इट विल बी गुड.
या तो हम सीधा ईयर से वो स्पेसिफिक स्पेशल नेम याद कर लें, जैसे 2004 में राइस, 2005 में पार्थेनियम, whatever trick you can make for it. What I did was, I'll tell you, a friend of mine, shout out to Nitin, he made a story. उसने इन सारे ईयर्स को एक स्टोरी में इंटीग्रेट किया, तो वो एक ऐसा स्टोरी हो गया कि वो स्टोरी जैसे ही मन में यू से, तो उसमें जो भी इंग्लिश वर्ड आता है वो बेसिकली उस साल के ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्टोरी 2004 से स्टार्ट होती है, 2004 राइस, उसके बाद जो भी एक इंग्लिश वर्ड आता है उस स्टोरी में, जैसे राइस, डेजर्टिफिकेशन, वाटर, तो एक एक ईयर आगे बढ़ता जाता है, 2004, 2005, 2006। तो I'll tell you the story. So the story starts like 2004 में हमने राइस लगाया, लेकिन पार्थेनियम आने की वजह से डेजर्टिफिकेशन आ गया। फिर कहीं से वाटर की व्यवस्था की और पोटैटो लगाया, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स हैं। साथ ही बायोडाइवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट भी लगाया। धीरे धीरे कोऑपरेटिव शुरू किया, और जब वाटर कोऑपरेशन आया तो पूरी फैमिली फार्मिंग में आ गई। लेकिन सॉइल ख़राब होने की वजह से पल्सेस लगाना चालू किया और सस्टेनेबल किया। लोगों को सजेशन ऑफ मिलेट्स दिया उनकी इंडिजीनस लैंग्वेज में, और उनको बताया प्लांट हेल्थ के बारे में, और कि हमारे शरीर के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़रूरी हैं। ये सब एक इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया। मन करे तो फिशेस एंड एक्वेटिक्स खा सकते हैं, पर मिलेट्स ज़रूर खाना। सो दिस वॉज द स्टोरी दैट आई हैड, जिसमें यू से द स्टोरी इन योर माइंड, एंड एज यू कीप सेइंग इट, एक एक ईयर आगे यू कीप इंक्रीजिंग। जैसे मन में यू सेड कि 2004 में राइस लगाया, फिर उसके बाद पार्थेनियम आ गया, तो दिस विल हेल्प यू रिमेंबर। तो दिस वॉज माई स्टोरी, how I tried to remember it, and it actually helped me. You can do it any other way, however, if you can make a trick for yourself. So 2004 was International Year of Rice, 2004 was Parthenium, 2006 was desertification, 2007 was water, 2008 was potato, 2009 was natural fibers, ऐसे करके the list goes on. And 2003 में we knew कि it was year of millets, and the next 2024 has already been declared by FAO as the International Year of Camelids. What are camelids? Camels. Okay, so these camels and yeah. We'll see different toxins produced in plants. There are some significant toxins that are produced different plants में. We'll take a look at them. So Gossypol, first one, Gossypol is produced in cotton. Gossypol is easy to remember क्योंकि cotton का scientific name ही Gossypium है, तो Gossypium is related to Gossypol, and Gossypol is present in cotton. Then a neurotoxin that is present in Lathyrus is ODPA, या फिर उसको BOAA भी कहते हैं. So ODPA stands for beta N oxalyl diamino propanoic acid, या फिर ODPA को BOAA भी कहते हैं, which is beta N oxalyl amino alanine. So इसकी वजह से लथायरिज्म कॉज होता है ह्यूमंस में. अगर रेगुलर कंजम्पशन हम करते हैं लथायरस बीन्स का, तो वी कैन बी अफेक्टेड बाय लथायरिज्म, which is a disease. So the other one is erucic acid. Erucic acid is present in rapeseed and mustard. We were talking about canola right earlier कि अगर erucic acid कम present है मस्टर्ड और रेपसीड में, तो हम उसे 00 वेराइटीज़ या फिर कैनोला वेराइटीज़ कहते हैं. तो कैनोला में erucic acid कम होता है, 2% से कम होता है. Then another one is goitrogen. Goitrogen is an anti-quality factor present in soybean. Then another toxin is saponin and plant estrogens. ये अल्फा अल्फा में present होते हैं. Then there is this common one, you will hear it while we are studying
groundnut. It is aflatoxin. Aflatoxin is present in groundnut. ये कैसे रिलीज़ होता है? ये एक फंगस की वजह से रिलीज़ होता है. The fungus's name is Aspergillus flavus, and when the plant goes through drought injury or any mechanical injury, drought stress or mechanical injury, then increased amount of aflatoxin is released. It has a range that is not harmful for consumption, but beyond it, it is actually not good for consumption. So the other toxin is coumarin. It is present in sweet clover. C-N glucosides is cyanogenic glucosides. It is present in sorghum. sorghum में विनोसाइनाइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कैटल्स में टॉक्सिसिटी हो जाती है. अगर यंग प्लांट्स कैटल्स उसको खा जाएं तो फिर उनमें टॉक्सिसिटी आती है साइनाइड की वजह से. देन स्टेरॉइडल alkaloids are present in potato. Alkaloids are present in yam. Then raisins are present in mango. Raisins are you see एक dark colored, very thick dark colored liquid that oozes out of the bark area in general in trees. That is raisin. Raisins are you would have observed it mango trees में, so that is raisin. And antivitamin E factor is present in field pea, right? We'll see a few inhibitors and anti-nutritional factors in Fabaceae family. So one of them is antivitamin E factor. ये field pea में present होता है, तो pea, antivitamin E, you can remember it. Then polyphenolics are present in safflower. Trypsin inhibitors are present in pigeon pea, French bean and soybean. All of them belong to the Fabaceae family. इनमें trypsin inhibitor present होता है. Then hemagglutinin is present in French beans. Lethyrogenes are present in Lethyrus sativus. We talked about it earlier कि lethyrism cause करता है. Then glucosides are present in white clover. Sweet clover में coumarin present है और white clover में glucosides. Eicosanoic acid is present in rapeseed and mustard. Rapeseed and mustard में we saw erucic acid भी present है. It also has eicosanoic acid. Then polyphenolics are present in sunflower. We saw earlier यहाँ पे कि polyphenolics are also present in safflower. Sunflower and safflower are pretty much similar. We've seen them. So both of them have polyphenolics. And the cucurbits have cucurbitacins. The name itself is very similar, easy for us to remember. CN glucosides, cyanogenic glucosides are also present in cassava. ये कहाँ और present थे हमने देखा था, ये sorghum में present थे, right? So these are the toxins present in different plants. There are more that we will study when we'll be studying field crops. एक के बाद एक, it'll be easier for us to learn about them and relate about them जब हम different field crops पढ़ रहे होंगे. For now, this is all, and thanks for joining in. Thank you.